The beggar shrugged his shoulders as though puzzled and irresolutely followed the cook. It was evident from his demeanor that he had consented to go and chop wood, not because he was hungry and wanted to earn money, but simply from shame and armor propre because he had been taken at his word. It was clear too that he was suffering from the effects of vodka, that he was unwell and felt not the fainted inclination to work. अब यहाँ पर जो बेगर था उसने अपने शोल्डर को जो उसके ऊपर कुछ भी बर्फ़ आई होगी उसको ऐसे झटका रहा और उसके बाद वो अंदर गया और वो कुक को फॉलो करने लगा इस वजह से क्योंकि उसने अपना वर्ड दिया था कि हाँ मैं काम करूँगा और शर्म से कि क्योंकि वो काफ़ी शर्मिंदा था कि उसको झूठ बोलना पड़ रहा था वो काम नहीं कर रहा था उसका ये कहना था कोई काम नहीं दे रहा है बट यहाँ पर जब काम दिया गया तो वो मना नहीं कर पाया और उसको हाँ ही बोलना पड़ा यह साफ समझ आ रहा था कि वो वोडका जो पीता था उसके इफ़ेक्ट्स में था वो ठीक नहीं था उसको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो पैसे कमाना भी नहीं चाहता था सिर्फ शर्म के मारे वो काम करना चाह रहा था Skowatsov hurried in the dining room. There, from the window which looked out into the yard, he could see the woodshed and everything that happened in the yard. Standing at the window, Skowatsov saw the cook and the beggar come by the back way, into the yard and go through the muddy snow to the woodshed. Olga scrutinized her companion angrily and jerking her elbow, unlocked the woodshed and angrily banged the door open. अब ओल्गा भी गुस्से में थी क्योंकि उसको लग रहा था कि ये पिया हुआ है और ये वुड काटने आया है तो वो काफ़ी उसको भी बुरा लग रहा था और वो गुस्सा भी थी तो वहाँ पर वो आई और उसने अपनी दरवाज़ा खोल के उसको ज़ोर से खोल दिया दरवाजे को और आवाज़ हुई और जो स्कॉवर्ट सॉफ था वहाँ डाइनिंग रूम से एक विंडो थी जहाँ से वो पूरा यार्ड देख पा रहा था मोस्ट लाइकली वी इंटरप्टेड द वुमेन ड्रिंकिंग हर कॉफ़ी दो स्कॉवर्ट सॉफ वॉट अ क्रॉस क्रीचर शी इज़ अब यहाँ पर ओल्गा को क्रॉस की क्रीचर कहा गया है क्योंकि वो थोड़ी सी अपने मन की करने वाली थी और then he saw the pseudo schoolmaster and the pseudo student seat himself on a block of wood and leaning his red cheeks upon his fist sink into thought. The cook flung an axe at his feet, spat angrily on the ground, and judging by the expression of her lips began abusing him. Abusing him. Okay, अब यहाँ पर जो नकली स्कूल मास्टर और नकली स्टूडेंट था वो वहाँ पर बैठ के कुछ सोच रहा था और उसी के पैर के पास ओल्गा ने एक एक्स फेंकी और वहाँ पर उसको अब्यूज़ करने लगी मतलब वो तेज़ नहीं बोल रही थी बट हाँ धीरे धीरे वो बोल रही थी क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था और वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि अपने हिसाब से चलने वालों में से थी तो उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपनी कॉफ़ी पी रही थी और उसको आके ये सब करना पड़ रहा था The beggar drew a lock of wood towards him irresolutely, set it up between his feet, and diffidently drew the axe across it. The log toppled and fell over. The beggar drew it towards him and breathed on his frozen hands, and again drew the axe along it as cautiously as though he were afraid of its hitting his glosh or chopping off his fingers. The lock fell over again. अब वो बार बार लॉक को काटने की कोशिश कर रहा था उसको डर भी लग रहा था कि कहीं उसका हाथ ना कट जाए और बार बार वो कोशिश कर रहा था बार बार लॉक गिर जा रहा था तो वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था बट क्योंकि वो थोड़ा ड्रंक था ठंड भी थी इसलिए वो चॉप नहीं कर पा रहा था Skowatsov wrath had passed off by now. He felt sore and ashamed at the thought that he had forced
a pampered drunkard, and perhaps sick man to do hard, rough work in the cold. Never mind, let him go on, he thought, going from the dining room into his study. I am doing it for his good. स्कोवत्सोव को बुरा लग रहा था कि उसने एक बीमार आदमी को या एक परेशान आदमी को इतना मुश्किल वाला काम पकड़ा दिया है, वो भी इतनी ठंड में। मगर फिर उसने सोचा कि ठीक है, ये करेगा तो इसी का भला होगा, इसी को पैसे मिलेंगे। An hour later, Olga appeared and announced that the wood had been chopped up. Here, give him half a ruble, said Skovotsov. If he likes, let him come and chop wood on the first of every month. There will always be work for him. Okay, अब ओल्गा ने कहा कि उसने चॉप कर लिया है आदमी ने, तो स्कोवत्सॉव ने उसे हाफ रूबल देने को कहा और कहा कि हर महीने की पहली तारीख को आ जाना और वुड चॉप कर लेना। On the first of the month, the beggar turned up and again earned half a ruble, though he could hardly stand. From that time forward, he took to turning up frequently. And work was always found for him. Sometime he would sweep the snow into heaps or clear up the shed. At another, he used to bear the rugs and the mattresses. He always received 30 to 40 kopecks for his work, and on one occasion, an old pair of trousers was sent out to him. ओके अब हर बार जब भी वो काम करने आता था और बार बार आने लग गया क्योंकि उधर इसको काम करना अच्छा लग रहा था, और कभी अगर वुड चॉपिंग के लिए नहीं होता था तो स्नो को हीप्स में कर देता था, कभी मैट्रेस को डस्ट कर देता था, ऐसे अलग अलग चीज़ें उससे करवाया जाता था। उसे 30 to 40 कोपेक्स काम के लिए मिल जाते थे। एक बार तो एक ट्राउज़र्स, ओल्ड ट्राउज़र्स भी उसको मिले थे जो लॉयर के थे। When he moved, Skovosov engaged him to assist in packing and moving the furniture. On this occasion, the beggar was sober, gloomy, and silent. He scarcely touched the furniture, walked with hanging head behind the furniture vans, and did not even try to appear busy. He merely shivered with the cold and was overcome with confusion when the men with the vans laughed at his idleness, feebleness, and ragged coat that had once been a gentleman's. After the removal, Skovotsov sent for him. ओके अब स्कोवत्सोव अपना घर छोड़ के वहाँ से जा रहा था कहीं और, तो इसने मदद करवाई मूविंग पैकिंग में। और वहाँ पर ये बहुत ही दुखी और थोड़ा सा परेशान सा लग रहा था क्योंकि उसे पता था अब उसे काम नहीं मिलने वाला है। और बाकी लोग जो वैन के जो लोग थे वो इसको देख के काफ़ी हंस रहे थे और हंसी उड़ा रहे थे इस पे कि कैसा आदमी है ये। जब वहाँ से स्कोवर्ट्सॉफ चला गया तो उसने जहाँ ये गया था वहाँ उसने उसे बुलाया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61. Well, I see my words have had an effect upon you, he said, giving him a ruble. There is for your work. I see that you are sober and not disciplined to work. What is your name? Lushkov. I can offer you better job. Not so rough, Lushkov. Can you write? Yes, sir. Then go with this note tomorrow in my colleague, to my colleague, and he will give you some copying to do. Work, don't drink, and don't forget what I said to you. Goodbye. अब जब वो जा रहा था स्कोवर्ट्सॉव, उसने उसे पूछा कि तुम इतने डिसिप्लिन तो नहीं हो, फिर भी तुम पहले से सोबर हो चुके हो, काफ़ी अच्छे हो गए हो, तुम्हारा नाम क्या है? और पहली बार बेगर ने अपना नाम बताया, उसका नाम लश्कोव था। और उसने फिर स्कोवर्ट्सॉव ने पूछा, जो लॉयर था उसने पूछा कि तुम लिख सकते हो? उसने कहा हाँ। तो उसने उसे अपने किसी कलीग के पास, अपने दोस्त के पास भेजा और कहा उसके पास जाना और वो तुम्हें लिखने का कुछ काम देगा, कॉपी करने का, और वहाँ जाके पीना मत मगर काम करना। और उसे गुड बाय बोल के वो चला गया। Skovotsov pleased that he had put a man in the path of rectitude, patted Lushkov Jenny Lee
on the shoulder and even shook hands with his at parting. Lushkov took the letter, departed, and from that time forward did not come at the backyard for work. 2 years passed. One day Skovotsov was standing at the ticket office of a theatre, paying for his ticket. He saw beside him a little man with a lambskin collar and a shabby cat skin cap. The man timidly asked the clerk for a gallery ticket and paid for it with kopecks. ओके 2 साल पास हो चुके थे और ये एक स्कोवत्सॉव लॉयर जो था वो एक टिकट ऑफिस में खड़ा हुआ था थिएटर के बाहर, और वहाँ पर एक छोटा कम हाइट वाला आदमी आया जो एक कोट पहना हुआ था, एक कैप पहना हुआ था क्योंकि ठंड का टाइम था, और वो उसके साइड में खड़ा हुआ था और अपने टिकट के लिए कोपेक्स से पे कर रहा था. लश्कव, इज इट यू? सेड स्कोवत्सॉव, recognizing in the little man his former wood chopper. Well, what are you doing? Are you getting on all right? Pretty well. I am in a notary office now. I earn 35 rubles. Well, thank God. That's capital. I rejoice for you. I'm very, very glad, Lushkov. You know, in a way, you are my godson. I who shoved you into the right path. Do you remember what a scolding I gave you? You almost sank through the floor that time. Well, thank you, my dear fellow, for remembering my words. Okay. अब यहाँ पर जैसे ही उन लोग की बात हुई तो स्कोवत्सॉव पहचान गया कि ये वही बेगर है लश्कॉव, और फिर लश्कॉव ने बताया कि वो काम करने लगा है, वो नोटरी ऑफिस में काम करता है, उसे 35 रूबल्स मिलते हैं, और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया.